proper integrals. Residue theorem and its applications. This is your discussion today. Yes, sir. Residue theorem and its application to evaluate integral of the type and after this one we have two more topics are left, that is Taylor's theorem and Lorentz theorem. Application to Yes, sir. evaluate the integral of the type. So you see we have to discuss the integral of this type. First one is integral 0 to 2 pi f of x dx, and the second one we have to discuss about integral 0 to, not 0 to, it should be from minus infinity to plus infinity f of x dx. These two types of integral we have to discuss, and then this important concept of this fifth unit will be completed. So let us start our discussion. First type we have to discuss. What is the type and how to solve it one by one? I will let you know. You can see there. So I will take one question. It is better to take one question, then everything will be discussed in that question. Yes, sir. Okay. Let us take the question. Very important question. It is repeated so many times in our question paper, and we are expecting the same question again now this time also. Yes, sir. One second. It is also called the contour integration. Contour integration of these two types, if you discuss, both of the types will come under the contour integration. So we are discussing about the contour integration only. Can you tell me what is the residue theorem? Once again, the statement. Let f of z Residue be, theorem. yeah, statement. Let f of z be analytic function within and on the closed curve C. Let z1 comma z2 and so on z and r the points inside the circle C. Then integral over C f of z by integral over C f of z dz is equal to 2 pi I into sum of residue. Okay, that only we have discussed now. Residue at first point, residue at the second point,
and residue like that. We have to find out the residues at each and every point. Residue का formula भी मैं दिया आपको, multiple pole and simple pole. We have to find out residue. How to find out that concept is given now. Tell me yes or no. Hello? Hello? So let us discuss this question. Evaluate integral 0 to 2 pi 1 by 5 plus 3 sin theta d theta sin theta d theta are using residue theorem. Residue theorem. And sometimes the question will be given like that also. So that integral 0 to 2 pi 1 by 5 plus 3 sin theta d theta is equals to pi by 2. Now see how we are going to solve it. This question. For this one, we have to take a special substitution, and I will give you the reason also behind the substitution. Why I am taking this is the only substitution. Okay, see here, solution. Let us assume that here our substitution is put e power I theta is equal to z. This is your special substitution for this type of problem, 0 to 2 pi f of x dx. E power I theta will be the substitution. I will give you the reason why especially e power I theta is the only substitution I am taking later on. Now differentiate with respect to theta. So what happened here, you see, d by d theta of e power I theta is equal to d by d theta of z. Now differentiation of e power I theta with respect to theta is e power I theta into inner function is I, and then cross multiply d theta is equal to dz. From this d theta value is equal to dz by, actually I into e power I theta will come, but I into e power I theta values we have taken as z again. So this is the substitution, means in place of z, e power I theta, and d theta value is dz by iz. Hello? हाँ हेलो सर, एक्चुअली वो मेरा फोन हैंग हो गया था एकदम से सर. Okay, I'll tell you, no problem. Once again, we are discussing the integral of this type 0 to 2 pi. You just see the limits 0 to 2 pi, whatever it may be the function. Sometimes it is given to apply the residue theorem. Sometimes it is clearly only given just to show the answer. So this type of integral can be solved by using residue theorem only. इसके लिए the special substitution we are taking, you have to memorize the substitution will be e power I theta is equal to z, and then now differentiate with respect to z. You may have a question that why I am taking e power I theta is the only substitution. That reason I will give you here. After that I will erase it. E power I theta value
is equal to z. Now, if you apply the concept of De Moivre's theorem here e power I theta is cos theta plus I sin theta. We have discussed this one before also, right? Yes, Is sir. equal to z value is nothing but x plus iy. X plus iy. If I am comparing the real part and imaginary part, if you compare real part is this one, means x is equal to cos theta is your real part. X is equal to cos theta is the real part. Comma imaginary part means I coefficient. If you compare on both sides, we get y value sin theta. And now if you square it and add it, we get x square plus y square. If you add these two values, and this will also become a square and add it. Cos square theta plus sin square theta is nothing but what? It is 1. So this e power I Yes, sir. theta is equal to z represents a circle of center 0, 0 and the radius 1 unit. Mathematically, this one in our code language, I can also write it as C such that mod z is equal to 1. Can I write like this? Yes, sir. So कहीं पर भी अगर मैं e power I theta is equal to z लिख रहा हूँ, उसका मतलब ये है I am considering a circle of center 0, 0 and the radius is 1 unit. Always this is same. E power I theta is equal to substitution means a circle of center 0, 0 and radius is 1 unit. हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. इसके बारे में एक सर्किल है जिसका सेंटर 0, 0 है और उसका रेडियस 1 यूनिट है. किस टाइप के क्वेश्चन में? ये जो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, कंटूर इंटीग्रेशन. दिस इज योर सर्किल आई एम टेकिंग and 1 unit radius means it will be like this is 1, 0, this is 0, 1, this is सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 1, 0, -1 सर minus, yeah, yes, अच्छा, -1, 0. अपन 0,0 का लिए सेंटर. इसमें सर्कल यू नो दिस वन इंटरमीडिएट पढ़े आप या भूल गए? इसमें g और f की वैल्यू नहीं है ना. A circle of center 0, 0. Don't know the intermediate. I can't help you if you don't know the intermediate. नहीं सर, याद नहीं है मेरे को. तो आप याद कर लीजिए, आप निकाल के. अब मैं इंटरमीडिएट तो नहीं पढ़ा सकता हूँ. खाली ब्रीफ बोल दीजिए ना सर, प्लीज. See, if it is like that, x square plus y square plus 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. So this type of circle, we can have the center is minus g comma minus f and the radius is equal to formula is under root g square plus h square minus c. इसके फार्मूले से अपन सेंटर और रेडियस मालूम कर सकते हैं अगर एक्स टर्म और वाई टर्म उसमें है तो. यहाँ पर एक्स टर्म और वाई टर्म नहीं है. इट इज अ सर्किल ऑफ सेंटर 0, 0 एंड द रेडियस इज 1 यूनिट. अगर यहाँ पर 2 लिखा मैं तो सेंटर इज 0, 0, रेडियस इज 2 यूनिट. अगर 5 लिखे तो सेंटर 0, 0 एंड सेंटर इज 5 यूनिट्स. लाइक दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट. ठीक है, करेंगे कंटिन्यू अभी. यस सर. यस सर. ये तो हो गया आपको x प्लस आई वाई की वैल्यू. इसमें से अगर अपने को x माइनस आई वाई वैल्यू होना है, सपोज ये पूरा बेसिक बता रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन को कंप्लीट भी करता हूँ बताते हुए. x माइनस आई वाई की वैल्यू अगर आप ले रहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ऐसा आप लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज cos थीटा माइनस आई sin थीटा. माइनस आई साइन थीटा. एंड इफ यू टेक दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 तो यहीं पे लिख देंगे x प्लस आई वाई वैल्यू इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई sin थीटा. ठीक है. नाउ इन माय क्वेश्चन आई हैव sin थीटा वैल्यू. sin थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अपन इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन ऐड करें, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये दोनों इक्वेशंस. माइनस 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 माइनस. So what happened if you
इक्वेशन तो सॉल्व करने तो आता होगा आपको। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये प्लस एक्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये माइनस आई वाई माइनस आई वाई कितना हो जाता है, माइनस 2i/, Okay. इज इक्वल टू कॉस विल बी कैंसिल, माइनस आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा कितना हो गया, बोलिए। -2i अच्छा, sin इसको और theta. थोड़ा सिंपल वे में सॉल्व करके बोलता हूँ मैं आपको। एक्स प्लस आई वाई नहीं लेके और सिंपल वे में ले लेंगे, तो इसको थोड़ा और इजी कर देंगे आप। ये z की वैल्यू है ना, दिस इज z नो। Yes, sir. और सिंपल वे में लिखेंगे z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन। ऐसा भी करे तो आता मगर एक दो स्टेप बढ़ जाता। तो 1/z की वैल्यू क्या हो जाती, मतलब z कॉम्प्लेक्स की cos थीटा माइनस आई साइन थीटा नो। Yes, sir. नाउ सबट्रैक्ट दिस, here also, here also, here it is becomes plus. So this is z minus 1/z is equal to cos and cos cancel. This is I theta, I sin theta plus I sin theta is 2i sin theta. Okay. This one I Yes, think sir. if you take the LCM and continue, z is the LCM. Here we get z square minus 1. Okay. Is equal to 2i sin theta. अगर मेरे को खाली sin theta की वैल्यू होना तो 2i को इधर नीचे भिजा देंगे, is equal to sin theta. Because I want this sin theta value, ये वैल्यू चाहिए। तो sin theta की वैल्यू क्या आ गई, z स्क्वायर माइनस 1/2i z, ये z आ गया। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कुछ डाउट है? नहीं, sir. और अपने को एग्जाम में ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या क्या चीजें लिखना है एग्जाम में मेजरली वो बता देते। आपको ये लिखना है, Yes, ये sir. पूरा पार्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू राइट दिस मच एंड यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ डी थीटा हियर, बिकॉज वी रिक्वायर डी थीटा and we require this value and we require this value enough। बाकी आप ये सॉल्व करके नहीं भी बताएंगे एग्जामिनर को तो नो प्रॉब्लम। ये आप सर्किल है बोल के सेंटर 0,0 नहीं बताएंगे, नो प्रॉब्लम। कैन वी कम टू द क्वेश्चन, अभी अपन डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाएंगे, नेक्स्ट पेज में जाएंगे। Yes. ये टाइप के इंटीग्रेशन को आई थिंक 2-3 क्लासेस में कंप्लीट कर सकते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 0 to 2 pi 1/5 plus 3 sin theta d theta we are talking about, which is Yes, equal sir. to अब यहाँ पर देखिए अच्छे से, 0 to 2 pi का मतलब क्या है, ये किसके लिमिट्स होते हैं, सर्किल के होते हैं ना। सर्किल बता दिया देखो Yes, अपन sir. पीछे, यहाँ पर ये बता दिया 0 to 2 pi मीन 0 to ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 0 to 270 to 360। 360 मीन्स 2 pi। कभी भी क्वेश्चन में 0 से 2 pi का मतलब है वो सर्किल के लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1/5 + 3 साइन थीटा की वैल्यू अभी अपन निकाले यहाँ से, क्या है वो वैल्यू, z स्क्वायर माइनस 1/2i z, Z square -1/2i z is equal. z स्क्वायर माइनस 1/2i z अच्छा, तो ऐसा निकालना है इसकी वैल्यू. इंटू डी थीटा की वैल्यू भी अपन निकाल ली है पीछे, dz/iz, dz/iz। इसीलिए अपने को जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो वैल्यूज आपको परफेक्टली आ गए तो बस है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर c 1 by, what is the LCM of this, 2iz is LCM, 5 2s are Z. 10iz plus 3z square minus 3 into dz/iz, right? This z Yes, sir. this z cancel,
Okay, even I also cancel. I also cancel here. This I will be cancelled. 1/1/2 का मतलब 2 will be totally outside. ये 2 1/1/2 2 outside. Integral over c 1 by, I'm writing in a proper order. It is 3z square plus 10 I z minus 3 into dz. यहाँ तक कुछ डाउट है? No, sir. So we have to take the factors of this that is in the rough column. Here I am doing. इसके factors निकाल रहा हूँ मैं. This is 3z square, okay, plus 10 I z. अच्छा, आप ये बोलिए, आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए क्यों निकाल रहा फैक्टर्स? तो वाई? बिकॉज आई हाँ वांट सर। टू चेक द पोल्स ऑफ दिस एफ ऑफ जेड. ये सर्किल के अंदर कितने पोल्स है, सर्किल के बाहर कितने पोल्स है, वो चेक करने के लिए उसको फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स निकालो. 3z square plus 10 iz can be written as 9 iz plus iz, 9 9 right? sir. प्लस iz. Yes sir. ये -3 को अगर अपन आई से मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये -3 है ना. अगर मैं इसको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर, आई स्क्वायर से, तो क्या हो जाता है? आई स्क्वायर वैल्यू -1 ना, so it is Minus becomes 3 plus I 3. square और plus आई 3. स्क्वायर वैल्यू इज -1, so it is becomes हाँ plus 3. हाँ, plus 3. So this is, we write it as plus 3. From these two, what common? 3z common. So z plus 3i left off. इसमें से क्या ले सकते हैं आप कॉमन? अब आई कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. आई कॉमन लेंगे. अच्छा, एक काम करेंगे, आपको और थोड़ा क्लियर बताएंगे. यहाँ पर -3 से देखो, राइट. ये माइनस को सर मैं आप हटा वैसा के, करा रहे थे तो समझ में मैं आ रहा एक था ना। अच्छा। कॉमन लेते खुद कंफ्यूजन नहीं होना बोल के आपको बता रहे हैं. ये माइनस की जगह पे क्या कर रहे हैं? ये माइनस की जगह पे मैं आपको एक अलग कलर भी यूज करता हूँ यहाँ पर. ये माइनस की जगह पे अपन ऐसा लिख सकते हैं, +3i² बोल के. आई स्क्वायर वैल्यू -1, हाँ। फिर यही स्टेप आ जाता है ना. ओके, now it is convenient to take 3z common. We are left with z plus 3i, and from this we take यस I सर। common. अब इजीली आपको नजर आता है कि भाई अगर z I कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है. अब देखो, z plus 3i into 3z plus I are the factors of this. इसके फैक्टर्स हो गए. आज एक क्वेश्चन में भी पूरी क्लास हो गई तो कोई परवाह नहीं है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे इसको से समझ क्या में आया. बोलते तो सर, ये इक्वेशन को अपन उसमें नहीं डाल सकते कैलकुलेटर में? नहीं, इमेजिनरी नंबर उसमें नहीं रहा था ना, कैलकुलेटर में आता. क्या बोलो? अरे नहीं डाल सकते आप डीजल. तो अब ये आ गए आपके z plus 3i, 3z plus I. तो व्हाट आर द पोल्स, टेल मी. अब इसके पोल्स देखिए आप. देयरफॉर द पोल्स ऑफ, इसको मैं कंपेयर करता हूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रल ओवर c f of z dz से कंपेयर. द पोल्स ऑफ f of z आर, क्या है पोल बोलिए? z इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में कर रहे थे ये, +3i का पोल -3i, कॉमा माइनस z इज थ्री इक्वल आई -i/3. ये होता ना आई इसमें से, बाई। -i/3. यस सर। अब ये मेरे को बोलिए कौन सा पोल सर्किल के अंदर है, कौन सा सर्किल के बाहर है. 1 यूनिट रेडियस का सर्किल है अपना. यस सर। कौन सा सर्किल के अंदर है, कौन सा सर्किल के बाहर है? ये -i/3,
मतलब 0.3 है, सर्कल के अंदर है, और ये -3i ये आउटसाइड है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप therefore z is equal to -i/3 lies inside C। अरे हाँ, inside C -3i बाहर ही आता, जी, -3i lies, क्योंकि -1,0, 0,1, यस, 1,0, यूनिट सर्किल लेना 0,1 हमेशा। -1 है, तो फिर तो यूनिट -3i बाहर ही जाता। जी, तो आपको रेसिड्यू सिर्फ i/3 पे करना है। ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, बाय कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, बाय रेसिड्यू थ्योरम, what is the statement of residue theorem? Integral over C f of z dz is equals to, tell me what, 2 pi I into sum of residues। कितने रेसिड्यू सर्किल के अंदर है? खाली एक ही से, i/3। सम ऑफ फॉल्स। एक ही रेसिड्यू अंदर है ना, तो इसके ऊपर ही यस सर। रेसिड्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिर्फ एक ही सर्किल पे रेसिड्यू करना है। रेसिड्यू एट i/3 फॉर्मूला क्या है याद है? z माइनस लिमिट लिमिट z टेंड्स टू i/3, z0। z0 की अच्छा, वैल्यू i/3 है, i/3 z है। माइनस मुझे i/3 i/3। into f of z, this is equals to limit z tends to i/3, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3z माइनस i/3 इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड की वैल्यू अगर आप कंपेयर करें तो ये वैल्यू एफ ऑफ जेड की, देखिए आप, है ना? तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे 1/z+3i इंटू 3z+i, 3i/3 पे करें ना, z 3z, z टेंस टू माइनस, और सॉरी यहाँ पर माइनस लिखना भूल गए, तो ये भी माइनस आता, ये प्लस हो जाए, ये 3z+i, ये दोनों कैंसिल, टेक 1/3 आउटसाइड, और जहां पर भी z है वहां पर -i/3 रख देंगे। 1 by, if you put z value is -i/3 plus 3i, तो सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 1/3 into, what is the LCM here, denominator 3 is the LCM now, minus यस i सर। plus 3 3 is the 9i, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता, दिस इज 1/9i minus i 8i, ठीक है, ये 8i इसकी वैल्यू है रेसिड्यू, ठीक है, तो 2 pi i से मल्टीप्लाई करके ये 2 से भी मल्टीप्लाई, तो फाइनली 2 into 2 pi i into, look at that, रेसिड्यू एट i/3 ये पूरा कर लिए थे, इसका आंसर 1/8 आया, 1/8 आया, राइट। ये i से i कैंसिल, 2 1 जा, 2 4 जा, अगेन 2 1 जा, 2 2 जा, तो कितना आंसर आ गया इसका? 5/2। i पाई बाई इसकी टू। वैल्यू है 0 to 2 pi 1/5 + 3, बोले किसकी वैल्यू है? 5 + 3 sin साइन थीटा थीटा। dt। देखिए आप यही प्रूव करना है क्या, देख लेंगे हम, देखो यहाँ पर 0 to pi 0 to 2 pi 1/5 + 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 pi/2। तो एक बार फिर से मैं ओरल एक बार ब्रीफ बता दे रहा हूँ। पहले आप ले रहे हैं e⁻i थीटा इज इक्वल टू z इज द सब्स्टिट्यूट। Why? Because this यस। represents a circle of center 0, 0 and radius 1 unit, and this is the reason behind it.
and now differentiate with respect to theta. Why with respect to theta means I want to get the value of d theta. This is getting the value of d theta. And now after that I required the sin theta value. इसके लिए क्या करेंगे? We know the z value is cos theta plus I sin theta, and we know the complex z value is 1 by z. Is if you add these two will get sin theta. अगर मान लो क्वेश्चन में cos theta रहता ना, तो अपन इसको ऐड नहीं करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, cos और cos कैंसिल हो जाता था, sin की वैल्यू अपने sin कैंसिल होकर cos मिल जाता. cos का भी क्वेश्चन करने वाले हैं. So then we are replacing all these values. 0 to 2 pi actually representing a circle. So here you have to put, and that some of the terms are cancelled taking the LCM. After this one, we have to simplify this one and see what are the, how many poles we are getting in the rest. We are solving. That we are simplifying and getting the z plus 3i and 3z plus I. Okay, so z is equal to minus 3i and z is equal to minus I by 3 are the poles of f of z. And which one is lies inside the C and which one is lies outside the C. जो सर्कल के अंदर है उसी की अपने को जरूरत है, जो सर्कल के बाहर है उसको अपन छोड़ देंगे. So by residue theorem 2 pi I into sum of residue, we are getting only one residue which is lies inside the C, that is minus I by 3 है. minus I by 3 पे इसका पोल फाइंड आउट करेंगे. z tends to minus I by 3, z minus of minus, minus into minus plus I by 3. f of z value is this one. So replace this, cancel is 1 by 8 I am getting. तो इसके बाद 1 by 8 I को ये 2 pi I से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर इसके बाजू में 2 भी है, तो इसलिए ये वाला ऐसा हो गया. दिस इज 2 2, ये बाद में कॉमन आया, सो 2 पाई आई वो रेसिड्यू के फार्मूले से 1 by 8 I इज द आंसर. इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद वी आर गेटिंग आवर आंसर इज 5 by 2. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लास्ट टाइम 90% मैं Yes. इसी को एक्सपेक्ट करा था, बट ये नहीं आया. बट आई मे एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन दिस टाइम. Yes, sir. इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी अपने को करना है, सिर्फ साइन आज अपन करें, कॉस के ऊपर भी करना है. ओके, इसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेकंड टाइप भी करना है. मतलब आप इसको 4 क्लासेस पकड़ के चलिए, 4 क्लासेस प्लस 2 क्लासेस, 6 क्लासेस में आपका टोटल सिलेबस हो जा सकता है इंशाल्लाह. एंड मैक्सिमम कैसा भी मैं अरेंज करके बिफोर रीओपनिंग योर कॉलेज आई विल फिनिश इट. Yes, sir. पूरा कंप्लीट कर देता हूँ मैं, डोंट वरी. कल भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्लास होने की, बट इंशाल्लाह संडे होगी, शायद संडे होंगी. ठीक है ना? संडे सर शाम में रखिए ना सर, 8:30 संडे ही को. रख, शाम में ही रख सकता हूँ मैं, सुबह में मैं भी नहीं रख सकता संडे के. मैं थैंक यू खुद भी सर. अवेलेबल नहीं रहता संडे मॉर्निंग में, तो संडे भी शाम में ही होती वो क्लास कैसा इंशाल्लाह. ठीक है ना? आई होप दिस क्लास यू यस. अंडरस्टैंड. मैं अभी स्टॉप कर दे रहा हूँ उसको. आई विल सेंड द PDF. थैंक यू सर.